The next day he took the backpack to school and asked his teacher, 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 for help. The next day he took the backpack to school and asked his teacher for help. The teacher announced, देखिए यहाँ पे ANNOUNCED, announced the name during the morning assembly. Assembly, ASSEMBLY, assembly. देखिए यहाँ पे the teacher announced the name during the morning assembly. A few minutes later, a boy came running towards TOWARD, towards them. A few minutes later, a boy came running towards them. That is my backpack, the boy said. That is my backpack, the boy said. चलिए अब इसको पढ़िए. Happily, 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 Aman explained, EXPLAINED, explained that he had lost, LOST, lost it while riding his bicycle, 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 the previous, PREVIOUS, previous evening, EVENING, evening. देखिए यहाँ पे Aman explained that he had lost it while riding his bicycle the previous evening. He thanked, यहाँ पे देखिए THANK, thank में ED लग गया तो क्या पढ़ेंगे? Thanked Rohan and said, I was very worried, 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 because, BECAUSE, because my homework, देखिए दो वर्ड्स इसमें है, HOME, home, WORK, work, homework was inside the bag. देखिए यहाँ पे he thanked Rohan and said, I was very worried because my homework was inside the bag. The teacher smiled, 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 and praised, PRAISED, praised Rohan for his honesty, HONESTY, honesty. देखिए यहाँ पे the teacher smiled and praised Rohan for his honesty. देखिए said, I am the fastest animal in this forest. Said, I am the fastest animal in this
forest. No one can beat, B-E-A-T, beat me. No one can beat me. The hare smiled and replied, R-E-P-L-I-E-D, replied, speed is important, I-M-P-O-R-T-A-N-T, important, but wisdom, W-I-S-D-O-M, wisdom is also important. The hare smiled and replied, speed is important, but wisdom is also important. The rabbit did not agree. The rabbit did not agree. He challenged, C-H-A-L-L-E-N-G-E-D, challenged that hare to a race. He challenged the hare to a race. The next morning, many animals gathered, G-A-T-H-E-R-E-D, gathered to watch, W-A-T-C-H, watch the race. Many animals gathered to watch the race. The fox, the deer, and the monkey were very excited, E-X-C-I-T-E-D, excited. देखिए यहां पे the fox, the deer and the monkey were very excited. The race started. The race started. The rabbit ran, R-A-N, ran very quickly, Q-U-I-C-K-L-Y, quickly, and soon moved, M-O-V-E-D, move, M-O-V-E रहेगा तो move पढ़िएगा, जैसे D लगेगा तो moved, far ahead, ahead नहीं पढ़ेंगे इसको, ahead पढ़ा जाएगा, A-H-E-A-D, ahead of the hare. The rabbit ran very quickly and soon moved far ahead of the hare. After, A-F-T-E-R, after some time, the rabbit looked back and saw that he checked, C-H-E-C-K-E-D, checked every room in the house. He checked every room in the house. Finally, F-I-N-A-L-L-Y, finally, he found a small wooden, W-O-O-D-E-N, wooden box hidden, H-I-D-D-E-N, hidden under, U-N-D-E-R, under a table. यहां पे ठीक है ना, चलिए कहां पे है हम लोग, यहां पे देखिए. Finally, he found a small wooden box hidden under a table. With excitement, E-X
CITEMENT, एक्साइटमेंट। अगर यहां से लेकर यहां तक रहता तो एक्साइट पढ़ेंगे, जिसे EMENT लग गया, मेंट पढ़ेंगे, एक्साइटमेंट, ठीक है ना, एक्साइटमेंट। ही इंसर्टेड, INSERTED, इंसर्टेड द की इनटू द लॉक। देखिए यहां पे विद एक्साइटमेंट ही इंसर्टेड द की इनटू द लॉक, द बॉक्स ओपनड slowly, 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 the box opened slowly, inside there were old photographs, PHOTOGRAPHS, क्या पढ़ेंगे, फोटोग्राफ्स। इसमें दो वर्ड से, फोटो यहां से यहां तक फोटो और यहां पे ग्राफ्स, तो फोटोग्राफ्स एक साथ पढ़ेंगे। लेटर्स, LETTERS, लेटर्स, एंड अ डायरी, देखिए डायरी, DIARY, तो क्या पढ़ेंगे, डायरी पढ़ेंगे। देखिए यहां पे इनसाइड देयर वेयर ओल्ड फोटोग्राफ्स, लेटर्स एंड अ डायरी। चलिए अब यहां पे हम लोग देखते हैं, द डायरी belonged, BELONGED, belonged to his grandfather when he was a young। देखिए यहां पे आपने पिछले क्लास में आपने कमेंट किया था कि YOUNG, यूंग आप इस तरह से कमेंट कर रहे थे, जो गलत था। इसका सही उच्चारण होगा यंग, यंग पढ़ते हैं, YOUNG, यंग बॉय, ठीक है। चलिए अब यहां पे हम लोग देखते हैं, द डायरी बिलोंग्ड टू हिज ग्रैंडफादर व्हेन ही वाज अ यंग बॉय। आर्यन spent, SPENT, spent the whole, WHOLE, whole evening reading the diary। देखिए यहां पे आर्यन spent the whole evening reading the diary. It was full of interesting, INTERESTING, interesting stories। देखिए यहां पे STORIES, स्टोरीज। इस तरह से स्टोरी लिखा जाता है जब ये प्लूरल होता है, ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है। तो क्या है कि वाई जो है ना आई में बदलता है और ES लगता है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, स्टोरी, और इसको पढ़ेंगे स्टोरीज। एडवेंचर्स, देखिए यहां पे ADVENTURES, एडवेंचर्स। देखिए यहां पे टी के बाद यू है और लास्ट में RE है, तो क्या है कि इस TU का च उच्चारण होता है, क्या होता है, च। एडवेंचर्स एंड लाइफ लेसन्स। देखिए यहां पे इट वॉज फुल ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज, एडवेंचर्स एंड लाइफ लेसन्स when his grandfather returned home, when his grandfather returned home। पढ़िए अब, the next, NEXT, next morning, 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 Pip took, TOOK, took a deep, BREATH, क्या पढ़ेंगे इसको बताइए, इसको पढ़ेंगे ब्रेथ। देखिए यहां पे द नेक्स्ट मॉर्निंग पीप टूक अ डीप ब्रेथ, ही फ्लेप्ड। देखिए यहां पे FLAPPED,
PPED, flapped his wings harder, HARD, हार्ड में ER लग गया तो क्या पढ़ें इसको, harder, and flew, देखिए यहां पे flew, FLEW, flew up towards, towards पढ़ेंगे TOWARDS, towards Oliver's, OLIVER apostrophe S, Oliver's branch, BRANCH, branch। देखिए यहां पे he flapped his wings harder and flew up towards Oliver's branch. The wind blew but Pip did not fall. The wind blew but Pip did not fall. He felt the wind lifting him higher, हाई में ER लग गया तो हायर पढ़ेंगे। देखिए यहां पे he felt the wind lifting him higher. Pip looked down, 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 and saw the beautiful, BEAUTIFUL, beautiful forest, FOREST, forest. Pip looked down and saw the beautiful forest. तो दोस्तों इस प्रकार से जो है आप इंग्लिश पढ़ने की प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपका ज्यादा गलती हुई है तो आप जो है ना इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए और एक एक वर्ड्स को ध्यान से देख लीजिएगा ताकि आपको पढ़ना और लिखना दोनों आ जाए। तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास में बस इतना ही। आज का क्लास आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा।